Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The French Hub. In today's video, we'll start chapter number 8 of MO Passport 2, which is MO école, which is my school. So इसके अंदर हम इन टेक्स्ट पार्ट जो जितना भी हमारा ग्रामर टॉपिक्स एंड दिस वन वो हम कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग फ्रॉम हेयर. इट सेज बोंजूर je m'appelle लुइस. तो यहाँ पर एक लड़का लुइस है जो कि अपने स्कूल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वही इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर दिया गया है. Je vais parler de mon école means I am going to speak about my school. The je vais dans une école mixte means I go in a mixed school. Mixed school का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लड़कियाँ लड़के girls and boys both studies together. C'est une grande école means it's a big school. Il y a 500 élèves et 30 professeurs means there are 500 pupils, 500 students and 30 teachers. À l'école, on porte un uniforme means in the school we wear uniform. Le bâtiment est vieux mais nous avons beaucoup d'installations means जो हमारी building है, school building है, वो old है but we have a lot of setup और installations. Il y a un rez-de-chaussée et 3 étages means it has a ground floor and 3 more floors, first, second, third. Au rez-de-chaussée means at the ground floor or on the ground floor. Il y a l'école means there is reception. Le bureau de l'administration means administration office. Et le bureau du directeur means and director's or principal's office. Then on the first floor, au premier étage et au deuxième étage, first और second floor पे nous avons des salles de classe, मतलब students की क्या है, class है, classrooms है. Au bout du couloir du deuxième étage means at the end of कॉरिडोर ऑफ सेकेंड फ्लोर, मतलब सेकेंड फ्लोर का जो कॉरिडोर है उसके एंड पर हमारे पास क्या है, कैंटीन है. और troisième étage nous avons une grande bibliothèque means on the third floor we have a big library. À gauche de la bibliothèque means at the left side of the library il y a un gymnase means there is a gymnasium. À droite de la bibliothèque il y a une salle d'informatique means at the right side of library हमारे पास क्या है, कंप्यूटर रूम है. वैसे ही derrière le bâtiment de l'école means behind the school's building il y a un grand terrain de sport means there is a big sports ground. Nous avons ici le cours de basket, de foot et de tennis means here we have basketball class, football class and class of tennis. Mon école n'est pas très loin de ma maison alors je vais à pied means my school is not very far away from my house so I go to school by foot. J'aime beaucoup mon école means I like my school a lot. So ये टेक्स्ट हमने पढ़ लिया which was narrated by Lewis himself. Now यहाँ पर हमारे पास इसी के related questions हैं which you all will solve yourself. Then let's come to the next one which is these things. जैसे मेज़ो दे रखा है, मेज़ो इज़ हाउस ल सालों, तो ये हमारा रोटेटेड है ये वाली पिक्चर, तो स्लाइटली जस्ट आप लोग फ़ोन को भी रोटेट करना सो दैट यू विल बी एबल टू से इट क्लियरली. मेज़ो इज़ हाउस, le salon which is drawing room, le fauteuil which means armchair, then okay, la chaise which means chair, le garage which is garage, la bibliothèque library, l'armoire almira, l'évier means sink, la cuisine kitchen, la lampe lamp, la télé means television, le bureau is desk, la salle de bain is washroom, la table is table, la porte door, le frigo fridge, la chambre bedroom, la commode means drawers, les rideaux curtains, le canapé is sofa. Then la salle à manger means dining room, le tapis is carpet, le lit is bed, la cuisinière means gas stove. ओके तो ये हमारे कुछ आप लोग कह सकते हो एलिमेंट्स हैं घर के अंदर जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं. देन कमिंग टू दिस वन, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक रूम्स होते हैं जैसे बेडरूम्स होते हैं, डाइनिंग रूम होता है, तो उनके अंदर क्या क्या फर्निशिंग हमारी होती है, क्या क्या फर्नीचर्स होते हैं वो लिस्ट आउट किए गए हैं. सो सबसे पहले एलिमेंट जो है हमारा लिप यस विच मीन्स रूम्स. अब सैलो मीन्स ड्राइंग रूम, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लिस्ट आउट करी गई हैं, आप लोग यहाँ से देख लो और इनके मीनिंग्स को रीड कर लो.
ठीक है। वैसे ही शॉम्ब्र मीन्स बेडरूम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन सालों विच मीन्स अभी अभी हमने पढ़ा था ड्राइंग रूम, तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। क्विजीन इज किचन, ला साल दबा वॉशरूम, ला साला मोशी डाइनिंग रूम। तो ये सारे एलिमेंट्स फर्नीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ प्रेपोजिशंस, वेरी इजी वन। क्या है प्रेपोजिशंस, हमें पता है विच टेल्स द पोजिशन ऑफ द नाउन। ठीक है, मतलब वर्ब और नाउन के बीच में लिंक बनाता है हमारा क्या, प्रेपोजिशन। ओके, सो ये हमारे पास प्रेपोजिशन लिस्टेड हैं विद देयर मीनिंग्स। सुर इज ऑन, सु अंडर, avant बिफोर, après आफ्टर, pour for, contre against, dans in, dehors outside, avec with, sans without, devant in front of, derrière behind. Entre means between, loin far, près de means near, à gauche de at the left side, à droite de at the right side, à côté de means besides or at the side of, au-dessus de means above, au-dessous de means below, en face de means facing. अब जैसे आमने सामने कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं ना दिस शोरूम इज़ फेसिंग द पेट्रोल पंप, तो वो वाला फेसिंग। ओ बूथ द मीन्स एट द एंड ऑफ, ओ कुआ द मीन्स एट द कॉर्नर ऑफ, o milia the in the middle of, and the last one o further means at the bottom of. So this was a short chapter that we have completed. I hope it is clear. अगर कोई भी doubt रहता है so you may ask me in the comments. In the next video we'll complete the exercise.